Welcome everybody. I am Suhail Iqbal, trainer of PMP. I own SysComp International Private Limited and I have been training for the last 20 years. Today we have a special event here to celebrate. Biprajit Achharya from India has successfully completed our training program and also the PMP exam within just 10 days. Today, 27th of September, he appeared in the exam and passed with flying colors, above target in all three domains. So, today we have gathered here to celebrate for him. In this session, we will have two other students answering, questioning Biprajit about his exam. One is Kashif Saeed and other is Akbar. So, I will welcome Biprajit, Kashif and Akbar, and let us start with a big hand. अकबर अपना जरा माइक ऑन कीजिएगा. लें जी, दुल्हा मियां भी आ गए. जनाब बिप्राजीत साहब, क्या हाल है? I'm fine, thank you. Congratulations from all of us on a Congratulations. very great success. ये जनाब हमारा, Thank you, Kashif. Thank you, Akbar. he is our PMP now. अब ये आपको पढ़ा सकते हैं. The best part is, my take from here will be that आपके जो trainings है, the trainings which you have shared with us, those trainings are more than enough. Honestly speaking, Suhail sir, when I initially thought about this, it was last year, and that was in the month of February. After that, the entire country went into a lockdown because of COVID, and the exam had to be postponed. So the first extension was in the month of February this year. And then I got one more, in fact, one more reason that since the book was not available, I thought, okay, let me go ahead and postpone it once again. And ultimately, there was a demise at home, as a result of which I got extension once again. Okay, so today was the last option that I had to go ahead and appear this exam. And honestly speaking, I thought that everything is lost, because here, when I attended the class last year, it was never easy to learn that or to understand it. Okay. When I went to the videos in YouTube, I just couldn't manage to understand. Lastly, I'm sorry. जी जी बोले. Yeah, so but lastly, one fine day, I don't know how, okay, this again might be God's grace. One fine day, I saw your videos and I started loving it. The only reason is, when you go through other videos, okay, in YouTube, let's say, because that is the main source of medium which we usually refer to, we get to hear all this, in fact, all the knowledgeable individuals coming and speaking, but I don't see in any of the video wherein so much of in-depth knowledge is there. Because the way you go ahead and do your trainings, for example, this 2.5 hours to 3 hours, it's never easy. Okay, one particular chapter you will just pick up and then you will speak about it on that particular topic for 2 hours, 3 hours, and then you you make those stories out there. And since you're speaking in Hindi also, the biggest advantage is it stays on within the brain. It just sticks. And that was the biggest plus point. And then when I went through your recordings, that just because honestly, I did not do anything before. I just went through your recordings. I went through all that PM Aspire material that you have shared, those 20-minute sessions which were there, like 20 minutes, those questionnaires which was there,
Then even the last day when you had shared with me those 60-minute questions, like those 60 questions, those 5 bunches which you have shared, I finished all. So my only thing was your training, those PM Aspire questions, and along with this, I obviously purchased a few more questions from Udemy. That also has helped me a lot. So that was the only thing that I have done in last 2.5 weeks, because I still remember I when I initially went through your video, I sent you an email and then I asked you that, Suhail sir, this is my situation. Is it possible? And you said, yes, it is. And it needs a lot of dedication. And seriously, this videos, this examination papers which I have solved, that was the only reason how I could do it. And honestly speaking, the amount of knowledge that Kashif and Akbar has got, they will easily be able to crack it off. बट आपकी डिटर्मिनेशन के भी नंबर है ना. Determination, sir. Obviously, in fact, I slept for only 4.5 hours, 5 hours. I agree. In this 2 weeks, and that was it. It was a do or die situation for me. बिल्कुल. ये जी टोटल 7 से 10 दिन लगाए इन्होंने हमारे साथ, आधा आधा घंटा रोजाना रात को, और वो भी क्वेश्चन आंसर. बाकी ये वीडियोस देखते रहे हैं, क्वेश्चंस करते रहे हैं. मगर आप लोगों को याद होगा कि आखिरी दिन जब हमारी मुलाकात हुई थी तो ही वाज सो डिसअपॉइंटेड दैट ही वाज सेइंग कि मैं तो फेल होने जा रहा हूं, मैं तो बस अपीयर हो जाता हूं, वो भी सोच रहा हूं कि नहीं हूं. तो मसला ये है जी कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आधी सक्सेस है. और दूसरी बात ये थी कि अगर आपके सिमुलेशन एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे तो उसकी एक वजह यह है कि आप एग्जाम सेटिंग्स में नहीं बैठे हुए, आपको वो टेंशन नहीं है जो एग्जाम वाली है, और फिर आप गलतियां भी करते हैं, आपको पता है. अगर आप थोड़े से पॉजिटिव रहें तो एग्जाम में बंदा खुद ब खुद सीरियस हो जाता है. अच्छा, ये चीज तो है, लेकिन इसका वाइस वर्सा भी हो जाता है. कई लोग बहुत ही आला तैयारी करके जाते हैं, सिमुलेशन में भी बहुत अच्छे नंबर लेके जाते हैं, एग्जाम में वो स्टन हो जाते हैं एकदम. खैर, एनीवेज, आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट बिप्रजीत के इन्होंने मतलब मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई. इट वाज अ ग्रेट सक्सेस. आप अगर इनका स्कोर देखें तो इन्होंने जो तीनों डोमेन्स हैं, तीनों में अबव टारगेट हासिल किया है. मतलब ये किसी ऐसे बंदे का स्कोर नहीं है जिसको मतलब अचानक एग्जाम दे दिया या बगैर तैयारी के एग्जाम दे दिया. अबव टारगेट इन पीपल, अबव टारगेट इन प्रोसेस, अबव टारगेट इन बिजनेस एनवायरनमेंट. दैट इज रियली गुड. ये वो बंदा है जो कल कह रहा था मैं तो पास नहीं होऊंगा, अगला अटेम्प्ट करूंगा. बल्कि इन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया था कि मैं ये सोचने लग गया था कि अभी फिर अगली क्लास में भी इनको बिठाते हैं ताकि अगर कोई कमी रह गई है तो पूरी की जा सके. बट एनीवेज, आई हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिम एंड माशाल्लाह ही डिड इट. और बाकी ये है कि ये आपसे खुद डिस्कस कर लेते हैं अभी कि आप लोग क्या पूछना चाहते हैं इनसे. इन्होंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप कोई इनसे क्वेश्चन करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम. And one more thing, okay, in fact to Kashif and Akbar is एक चीज आप देख सकते हो. ऑब्वियसली यहाँ पे सर भी है, और सर मैं आपके साथ भी एक्चुअली एक चीज शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे. वन बिग प्लस पॉइंट जो मैंने देखा, जब मैंने आपका कोर्स, आफ्टर गोइंग थ्रू योर कोर्स, आई डिड नॉट हैव एनफ ऑफ टाइम, and I did not want to go ahead and confuse myself by going through those books, okay, because you need a lot of time to go through those books, and your videos were just amazing. So then I spent a lot of time solving those papers, those exam simulators that's there, and there's some excellent simulators actually in Udemy as well. And मैं actually वो share कर सकता हूँ with Akbar and Kashif, those the ones that I have solved myself, because मैं वो practice test papers वहाँ से खरीद के, and then I have solved those papers also, and I can share those with you as well. Very nice, very nice. जी जनाब, अकबर आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, सबसे पहले तो विप्रजीत को सर काफी ज्यादा
दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कि जैसे लास्ट टाइम इनकी वो क्लास थी, मैं खुद ये सोच रहा था कि मतलब बहुत ज्यादा शायद शॉर्टेज ऑफ टाइम है इनको, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अचीव किया है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल है। कॉन्ग्रेचुलेशन अलॉट। Thank you, Akbar. I know we are मैं connecting पेपर here. के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें अगर आप शेयर करना चाहें कि पेपर में कोई मतलब स्मूथ चलता रहा, आपने घर में दिया पेपर या फिर आपने एग्जाम सेंटर में दिया, और पेपर के दरमियान में कोई इस तरह की कोई चीज हुई हो जो आप शेयर करना चाहते हो, या फिर फार्मूला क्वेश्चन कितने थे और इजीली टाइम मैनेज हो गया था आपका या नहीं हुआ था, या फिर क्वेश्चन ज्यादा लेंथी तो नहीं थे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। You know what, Akbar? पहली बात तो यह है कि मैं घर से पेपर दिया नहीं, बिकॉज घर पे यहाँ पे देयर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, और यहाँ पे ये रूम पे बच्चे लोग आ जाएंगे कभी भी, एंड ये सब सोच के मैं बोला चलो प्रोमेट्रिक सेंटर में एग्जाम देता हूँ. द फर्स्ट थिंग. Now, the second point is that yes, there were mathematical questions. लेकिन mathematical questions जो है वो मैं but it was just 2 or 3 only. Okay, so it was very simple. Okay, number 2 and number 3 is how it happens is like there are 3 sets. Okay, so one set will be for 60 questions, second set of 60 questions, and third set of 60 questions. तो पहला 60 सवाल के बाद में आपको 10 मिनट की एक ब्रेक मिलेगी, and then you have your another next set of 60 questions, and then you have your second and the last 10 minutes break. Okay, so this is completely optional whether you want to go for the break or not, because in my case what I have done is I thought of that if I go for the break, then my momentum will be lost, so I did not take any break at all. I sat out there for those 4.5, like for those 270 minutes that's there, and I finished off my entire exam. Okay, and then I came out of it. Now, one point what I've realized, okay, one big learning from this is कि अगर आप ये पेपर्स देने जाओगे, जो like in fact my own मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, okay, there's a lot of English statements in that. And in case if you read those questions, you will just go mad because you will never ever be able to complete those things. ये मेरा पर्सनल, तो मैं यहाँ पे घर पे जब मैं ये सवाल सॉल्व कर रहा था, my initial problem actually was struggling with time also, like fighting with time, because here the biggest problem was how to go ahead and finish off. Because अगर यहाँ पे सपोज ये 60 क्वेश्चंस का एक सिमुलेटर है और मैं ये सॉल्व करने जाता हूँ, then what I figure out is कि ये 60 सवाल मैं कभी भी ऑन टाइम में खत्म नहीं कर पा रहा हूँ. Then what I figured out is कि हमेशा ऊपर में ये लोग जब लिखते हैं वो 3 लाइन या 4 लाइन का जब वो पैराग्राफ टाइप जब लिखेंगे, उसके नीचे में ये लोग एक लाइन लिखेंगे, what does the project manager do in this case? Like for example, for conflict management, what does the project manager do for this? So this is how I have done. मैंने क्या किया, मैंने वो 3 ऊपर का 4 लाइन छोड़ के मैं सिर्फ वो लास्ट वाला पार्ट खाली पहले पढ़ता था, पढ़ के इसके बाद मैं ऑप्शंस देखता था, तब इसके बाद मैं ऊपर जाके जस्ट एक ब्लिंक करता था कि व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट. देन इट बिकम्स इजी फॉर मी टू फिनिश ऑफ दैट पेपर. ये मेरा पर्सनल लर्निंग है. ओके, अदरवाइज अगर आप ऊपर का पूरा पढ़ोगे और नीचे का फिर आप एक लाइन पढ़ने जाओगे, व्हाट इज द प्रोजेक्ट मैनेजर वांट टू डू, माय एक्सपीरियंस सेज it's very very difficult to finish off the exam on time. Someone who is very good, he'll be able to do it, but for me it was very difficult. Okay, so honestly I did that and it just worked out for me. जबरदस्त जी. I might be wrong out here, Suhail sir, but नहीं this is what बिल्कुल I have आपने done. सही किया, ये मुझे आपको बताना चाहिए था, लेकिन शायद ये बात नहीं स्किप हो गई. And congratulations, Biprajit. Thanks, Excellent Kashif. achievement. Yeah, excellent achievement under time pressure. And thanks also for sharing with us your experiences. So maybe can you tell us a little bit what kind of agile or hybrid questions were there? Like also situational or something All very situational. All were situational, Kashif. Mm-hmm. All the questions were situational, and almost everything was on agile, I figured out, because I did not see anything on predictive. At least 2 or 3 questions were there on hybrid.
But other than that, everything was on agile and probably one or two on iterative. That's all. Okay. Hmm. So they are going full blown. But I'll share with you the Udemy links. Sorry, Okay. Suhail sir. I'm sorry. Yeah, please. No, but I'll share the link. Okay, the test papers, the practice test simulators which I have done. Then, or if possible, I'll just share those with you right away, so that you can just go through it whenever you get some time, and this will definitely help you. अच्छा विप्रजीत, आपका क्या ख्याल है कि do you think Kashif and Akbar are well prepared to go for it? Easily. Okay. Yes, they are. Mhm. Absolutely, Sohail sir. Kashif and Akbar, both of them are well prepared. Yeah. Right. We have another student. वो push चाहिए actually, पता है. Okay. एक दो लोग और भी हैं मेरे साथ, लेकिन वो थोड़े बिजी हो गए थे. एक तो वो काशिफ जानते हैं, हसीब नाज हैं. ही इज ऑल्सो ऑलमोस्ट रेडी टू टेक द एग्जाम, बट कोई हिचकिचाहट है. और दूसरे एक फैसल हैं और एक दो और हैं. मतलब काफी सारे लोग तैयार बैठे हुए हैं, बस वही हिचकिचाहट है, एग्जाम देने से थोड़ा डर रहे हैं. तो मेरा ख्याल है यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल. और आई डोंट नो क्यों लोग इतना ज्यादा इसमें डिले करते हैं. आप तो खैर चलें, मेरे केस में जी सॉरी, मेरे केस में सर थोड़ी सी ये टाइम का इशू है थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक वीक या एटलीस्ट 2 वीक्स जो है ना वो इंटेंसिव सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करूँ. तो वो मार्क स्पॉट में कहीं देख के मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी एग्जाम दूंगा. और अभी तो बिप्रजीत की सक्सेस स्टोरी देख के काफी मोटिवेशन भी हाई हो गई है मेरी. मेरे भाई. तो इंशाल्लाह मैं जल्दी बुक विप्राजीत ने करूंगा. टोटल 7 दिन पढ़ा है. बिल्कुल टोटल बिल्कुल 7. ऐसे ही है. ठीक है ना. तो आप 2 हफ्ते मांग रहे हैं छुट्टी के. मेरे ख्याल आप तैयार हो. आपको मैं जितने अरसे से पढ़ा रहा हूँ और मुझे अंदाजा है कि आपको सब कुछ आता है. अब आप फिक्र नहीं करें. अब आप बहुत ज्यादा बात है तो 3 दिन से लेके 7 दिन के गैप के साथ एग्जाम दे सकते हैं. अपनी एप्लीकेशन भरें. इंशाल्लाह साहब मैं बुक करता हूँ अपना. हाँ बिल्कुल. इतनी जल्दी तो सर मेरा ख्याल है कि एग्जाम की एप्लीकेशन ही फाइनल शायद ना हो. हाँ, उसमें भी वही ना 5-7 दिन तो लग ही जाएंगे कम से कम, अगर जल्द से जल्द भी हो जाए तो. मगर ये है कि चलें 2 हफ्ते बाद दे दें, लेकिन आज नियत तो करें ना. नहीं सर, इंशाल्लाह मैं एज सुन एज पॉसिबल करता हूँ ये बुक. बिल्कुल. जी सर, विप्राजीत को देख के तो अब नियत तो करनी बनती है, बल्कि करनी पड़ेगी. नहीं, बिल्कुल. वो सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट होता रहता है एक्चुअली. एग्जैक्टली. हम सिर्फ सोचते रहते हैं. और एक्चुअली और एक प्रॉब्लम क्या है ना कि ये एग्जाम के ऊपर इतना नेगेटिव थॉट्स है कि that this exam is so tough, it you need to give a lot of time, ये सब, इसलिए और भी ज्यादा डर लगता है. And there's a lot of money involved in all this stuff, so इसलिए सब लोग. But one thing is please take the plunge, form fill up कर दीजिए, and then just do it, just get a date and then work towards it. Seriously, नहीं तो ये हमेशा लेट होता रहेगा. बिल्कुल. पहली बात तो ये है कि यू शुड सेलिब्रेट. मैंने आपको कहा भी था फोन पे भी कि आप अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल सेलिब्रेट करें, खाना खाएं और एक दफा रिलैक्स करें, क्योंकि आपने काफी टाइम लगाया है इन चीजों के ऊपर और काफी कमिटमेंट. और मजे की बात यह कि आपकी फैमिली की भी इसके अंदर काफी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने आपको खुला छोड़ दिया. दूसरी चीज मैं आपको ये डेफिनेटली फैमिली बिल्कुल है. दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने रुकना नहीं है. आप अपने टारगेट को अलाइन करें और कंटिन्यू रखें इस जर्नी को. आपने ये कर लिया तो ये तो जो बंदा पीएमपी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है. अगर आप और कुछ नहीं तो मैं ये समझता हूं कि आप पीएमआई एसीपी की सर्टिफिकेशन के लिए तो बिला वजह तैयार है. 1-2 दिन की तैयारी के साथ पीएमआई एसीपी आपने पूरा पढ़ लिया हुआ अगर आप चाहें. और वो आसान है, बहुत ज्यादा आसान है. इससे वो 10% भी नहीं है. तो अगर हिम्मत करें आप तो वो भी कर लें. जब आपके हाथ में ये 2 चीजें होंगी तो फिर आपको और ज्यादा हौसला आ जाएगा.
ये क्या कहते हैं? Sure, sir. Sure, sir. Sir, ये PMI-ACP, is it different? मुझे पता नहीं था actually. It is Agile Certified Practitioner. Agile तो आपने सारा पढ़ लिया. हाँ. Agile का एग्जाम देते हैं अभी आप. और वो इससे बहुत आसान एग्जाम है. जब मतलब आपको मैंने बताया था ना, PMI क्या एक CAPM एग्जाम है जो इस PMP का छोटा भाई है. मतलब जो यंग लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस कोई नहीं है वो CAPM करते हैं. इसी तरह एजाइल का जो छोटा एग्जाम है वो है ACP, लेकिन वो पॉपुलर बहुत है. ऑल्दो मेरे हिसाब से तो आपको जरूरत नहीं है करने की, लेकिन ये है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अनदर सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. आई मीन नॉट एग्जैक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये है कि बिला वजह आप अपने साथ एक के बजाय 2 सर्टिफिकेशन लगा लेंगे और फिर आप देखिए कि और क्या कर सकते हैं, अपना स्किल और बढ़ाते जाएं. Sure, sir. एक चीज मैं बोल सकता हूँ that I consider this as the first step of knowing you. Okay, so obviously I need a lot of guidance from you in terms of this education, in terms of certifications and all going forward, and plus even the best practices. जो आपने already, obviously you have been sharing your best practices with everyone all these years, all these months and days. So going forward, if I need any help, if I need any assistance, I'll always reach out to you, sir. Of course, I'll be available for you anytime. और कभी भी आप कोई चीज है, कभी प्रैक्टिकल फील्ड का कोई प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट्स में कोई मसला है, एजिलिटी की कोई प्रॉब्लम है, प्रोग्राम्स की है, पोर्टफोलियोज की है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी. नो प्रॉब्लम एट ऑल. Sure, sir. Thank you very much. Thank you. चलिए, आप लोगों का कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं. Thank you so much sir for organizing this. Wonderful, wonderful. Thank you, Biprajit Achharya. Again, congratulations. Thank and you. Keep up this Thank you, spirit. sir. And thank you everybody for accompanying us and encouraging me. I think that is well deserved. Thank you and take care. Bye bye. Thank you Thank very you sir. much, sir. Congratulations everyone. Biprajit again. Okay, enjoy. Have a nice day. Thanks. Bye. Thank you. Good night, everyone. Yeah. Bye. Bye for now.